bowlers enjoyed there and some success. But a lovely bowler has the ability to swing the ball back into the right-hander and go across them, but bowls it at a half-decent pace, not express. Well, how about that? Welcome. Boundary early on for Nepal. Absolutely middled that one. I mentioned that Birdsall got a few starts. He looks a quality player. And as I mentioned, he might be disappointed that he had gone on in the previous two games, but he would really fancy getting some here against India. So in this tournament, a strike rate of over 130, which is good stuff. It's a wide chord from the square leg umpire. Thinking about the ramp, I think, and then just got too big. This is wide on height. And the wide is given as if it's above the batter's head in a standing position. They're up with the rate so far. Sent back. Run there. Cutter bowled. That's what it will see, how quickly India adjust to the surface that they're playing on. Immediately Arshdeep in his very first over, bowling what is called a cutter, which is like a left arm spinner. Had a little nibble of that one. Just thinking about just lifting it over past slip. What would normally be called deep third is almost at a deep backward point rather than a traditional deep third. It's in action now. 50 wickets. Should sing. Experienced. Very much a bowler, not much to offer with the bat necessarily. Side, another wide. Hand goes up. Apology. I think he'll be a little bit disappointed with his start here. He's a quality bowler. Do have others seen. Avish Khan, right arm fast bowler. Ravi Bishnoi is one to look out for. The spinner. Just in front. Just in front. Just for a moment, the captain, what was in. The taste of India. तूने ही मिलके करार जगाया. The taste of India. तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है. तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है. The taste of India. क्यों है? उतने टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना.
ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Again, that deep backward point. And then a man who is in between fine leg and deep square. Very much fine square, the majority of the field. Oh, bit of invention, a little scoop, and then only four. Boundary ball for Nepal. Well, he's going to give it a go, Bertel, that's for sure. Taking a punt that Avish Khan's going to go full with the first delivery, and so happy to scoop. That's wonderfully played. I mean, it's well outside off stump. We know that he's got the ability. Sort of 35 not out against the Maldives. Came in and enforced his average. He's not far off 50. Coolest day, but a breeze around now. If it stays like this for the afternoon game, it gets a bit warm for me. There'll be some support here for the afternoon game as well. Making their bow. Really inventive, isn't he? Tell. Hong Kong have got through that to Pakistan were facing. There'll be a lot of support here for Hong Kong. We'll see how they go. This time, swing and a miss. Really mixing up his pace here, Avish Khan. Slower ball the previous delivery. This one seam up. Just about missed the stumps. Sharp work around the corner. So making sure. And the other man, along with Jiddish Sharma, the wicketkeeper, who's making his debut. I was just about to say, actually, the keeper. You wouldn't know it. He's busy. He's directing the field. Yourself and the wicketkeepers are the energy in the team, and they get a great view of angles to assist captains in getting the field placing just perfect. She gets an edge and just about gets the boundary. Plus slip. Boundary ball for Nepal. Just well. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
Left arm orthodox. Very impressive economy rate in domestic T20, under 5.5. Good contact, straight to the man. There's lots of hugs, lots of applause, and what a lovely moment. Over the top of the field is inside the ring, and that fast outfield will do the rest. Boundary for Nepal. Utah looking to go over more extra cover, but with the help of a little bit of turn, it goes up and over point. But I like the fact that Nepal are having a go. They are saying, you know what, we're going to take you on. For one team, there is no tomorrow. Don't go home wondering. Extravagant sweep. Definitely all guns blazing from the off. So the power play was still just tweaking the field. He's got enough of that. He should be safe. Fumble in the deep, but got there eventually. Pick it up by the handle, boys. Ravi Bishnoi had long off. It just plugs. When running past, he gives it a hoof. Bang. Kicked it. You'll say I kicked it to my teammate. He then misfielded it. Probably a little surprised it was coming back to him. Even India can misfield. Little change of field as Kishore pushes long on back and brings mid-off up. To end the over. कल नहीं आए क्या हुआ सर वो मेरे सर में सर एक्चुअली सर मेरा मन नहीं था Be honest, be more milk. Amul. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। They're interested. Nothing doing. A little bit of nip back in. Second over for Avish. And 9 in his first. That's a handsome shot, and it's gone all the way. Sheikh coming to the party as well. Boundary 6 for Nepal.
there's just too much room here, and with the pace that Avesh Khan has, to be fair, he's given himself a little bit of room to make that space on the offside. And that's beautifully struck. First six of the innings. Calling for a wide. Umpire's not listening to them. He just gave himself room outside that leg stump again. And then sometimes it can be deceiving. You feel as though it's wide because you can't get there, but it's just shaved your off stump. Slip out. Now there's been a touch on that, and they have their first. It's Sheikh who has to go. Keeper gets his first. इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट क्यों है तेरे टैंके चल क्यों नहीं रही है क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना ये भी सही है ओके बाय और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। भारत को एक सफलता मिल चुकी है यहाँ पर और नेपाल के पहले विकेट खोया हालांकि अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी वहां पर भारत की नेपाल की 23 रन बनाए थे उन्होंने मगर अवेश खान को मिलती हुई पहली सफलता कॉट बिहाइंड हुए वहां पर अच्छी गेंद अच्छा उछाल लेते हुए वहां पर मगर वाइट का इशारा तो अंपायर का काफी कंधे से ऊपर चली गई थी गेंद और बुरतेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर नए बल्लेबाज के रूप में माला आए हैं जिनको अभी भी खाता खोलना है अवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की अर्शदीप ने उनका साथ दिया मगर बाउंड्री स्ट्रोक्स खेले थे कुछ बल्लेबाजों ने नेपाल की तरफ से एक अच्छी शुरुआत वहां पर हुई थी मगर इसी ओवर में सफलता मिलती हुई अवेश खान को भारत ने 202 रन बनाए थे अपने 20 ओवर निर्धारित 20 ओवर अंतिम ओवरों में काफी अच्छा प्रहार किया रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने और एक अच्छा टारगेट दिया है नेपाल को बल्ले चेस करने के लिए 203 का लक्ष्य है वहां पर तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है मगर क्रिकेट में कहना कुछ भी अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है नेपाल ने इस एशियन गेम्स के अंदर बुरतेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर माला को अभी अपना खाता खोलना है अच्छा ओवर अब तक कहा जा सकता है अवेश खान का चौथा ओवर भारतीय इनिंग बीच हुए बल्लेबाज ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति को योग 30 एक विकेट नुकसान पर बढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया जीता है इंडिया नो फ्रूट्स ऑन प्लेन देखो किधर है ये लो पार्ले कच्चा मैंगो बाइट कच्चे आम का कॉफी कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और एक देखते हैं गेंदबाजी में कोई प्रत्याशी भी है गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है मगर कुछ बाउंड्री स्ट्रोक्स बल्लेबाजों ने लगाए थे बुरतेल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं माला को अभी अपना खाता खोल रहे हैं
बाएं हाथ के बल्ले गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीच में वहां पर बल्लेबाज अपील जरूर हुई हल्के में, मगर कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अभी भी कुल 30 रन, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था वहां पर अर्शदीप ने। नितेश शर्मा ने अपील की मगर बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है और स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा का। शुक्रिया प्रवीण। जी हाँ, एक विकेट खो दिया नेपाल ने, थोड़ा एंगल में बदलाव, अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा आप रूम मत दीजिए, जितना विकेट गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं भूरतल। अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल जानती है कि ये छोटा लक्ष्य नहीं है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। 200 से टारगेट होता है, हमेशा वो एक दबाव रहता है। दबाव इस चीज का भी है कि आप शुरू में ज्यादा विकेट ना खोएं। ये पावर प्ले में कितने रन आते हैं जब गेंद नहीं है, ठोस है, किस प्रकार आप बल्लेबाजी करेंगे वो भी अहम रहेगा नेपाल के नजरिए से। इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊपर गई है और मिलेंगे 6 रन। अच्छा संपर्क वहां पे। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला वहां पर भूरतल ने और गेंद छोटा बेंच थी और गेंद को टच कर दिया था और गेंद चले गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, काफी हवा में थी गेंद और काफी स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है और वहां पे वॉलंटियर्स के द्वारा गेंद वापस आती हुई 6 रन अर्जित करके भूरतल अपनी इस इनिंग में 36 पे जा पहुंचा स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे आक्रामक स्ट्रोक खेले हैं। जब भी उन्हें रूम मिलता है तो अच्छा प्रहार करते हैं। गेंद को एक बार अंपायर चेक करते हुए, क्योंकि गेंद स्टेडियम के बाहर गिरी थी, और फिर एक बार फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लग चुके हैं अब तक इस नेपाल की इनिंग में। और एक ये भी है ना कि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और जो टीम आज हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो वो भी एक अलग प्रेशर दोनों ही टीमों पर डालती है। नेपाल अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है, हमने इनको एशिया कप में देखा था और अच्छी बल्लेबाजी की थी भारत के विरुद्ध। मुझे एक मुकाबला याद है, अच्छे रन बनाए थे। तो धीरे धीरे टीम उभर के आ रही है। और एक और चीज भी है ना प्रवीण, अगर आप देखें, अब कई हम देशों को देखते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, अन्य जगह से अलग अलग नेशन से वो खिलाड़ी आते हैं, वो नेशनैलिटी लेते हैं, पर नेपाल के देखें यही सारे नेपाल के ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, वहाँ पर जो क्रिकेट है बहुत अच्छी क्रिकेट वहाँ खेली जाती है। मुझे भी एक मौका मिला था जब 1982-83 में कॉलेज की टीम को जम्मू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम नेपाल खेलने गए थे। तो बहुत अच्छे टूर्नामेंट हुआ करता था और वहाँ पर जब क्रिकेट तब अभी नई शुरू हुई थी तो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे क्रिकेट के सेटअप को देख के। वो बड़े अच्छे ग्राउंड्स बन गए हैं, अच्छे स्टेडियम है। नेपाल प्रीमियर लीग भी वहाँ पर होती है। तो धीरे धीरे क्रिकेट जो है नेपाल में काफी पॉपुलर होती जा रही है और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं वो काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक अच्छा नाम बना रहे हैं। अभी हाल में देखा एशिया कप में क्वालिफाई किया, अब एशियन गेम्स में 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अच्छी वापसी अर्शदीप द्वारा, बढ़िया अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधे बैट से मिलेंगे 4 रन। 40 पे 1 नेपाल। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना, और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 40 रन, 1 विकेट नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति, 8 रन की गति से रन बन रहे हैं। हालांकि 203 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। अभी अच्छी बल्लेबाजी की है, देखना है कि अब गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। और पावर प्ले का अंतिम ओवर का कोशिश रहेगी। स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बड़ी गुगली उनकी जो है वो काफी प्रचलित है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा सा गेंदबाजी करने में परेशानी जरूर होती है और एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभरे। काफी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं भारत की तरफ से और एक अच्छा प्रदर्शन किया है रवि बिश्नोई ने। इस बार हवा में थी पर फील्डर को क्लियर करते हुए मिलेंगे 4 रन। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी मौका मिलेगा उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गेंद को आगे डाला था रवि बिश्नोई ने और टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर जो इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे वो किया। तेज गति गेंद थी, अब स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करने का प्रयास। मिड विकेट के फील्डर ने प्रयास भी किया पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई एक स्लिप तैनात है रवि बिश्नोई के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर, कोशिश है कि नेपाल के बल्लेबाजों की ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में बटोरे जाए और उसके बाद अच्छी गेंद यहाँ पर ऑप्शन पर पड़कर और बाहर निकलती हुई। बिश्नोई जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाज को बीट किया जाता है। आप अंकुश लगाया वहां पर उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और ये फर्क है प्रवीण, अगर अभी सतह को देखे ना, थोड़ा दोहरा उछाल है, ये गेंद थोड़ी उठ के ज्यादा उछाल ली, थोड़ा फील्ड परिवर्तन। अब जो डीप स्क्वेयर का फील्डर है उसको अंदर बुलाया गया है, जो मिड विकेट में फील्डर था जहाँ पे चौका गया था उस फील्डर को पीछे रखा गया है। थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन है। इस बार डाइव किया शिवम दुबे, शॉर्ट फाइन पे अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, 1 रन और मिलेगा। और मुझे लगता है सबसे अहम रहेगा यहाँ पे भूरतल का रोल, क्योंकि उनको वो शुरुआत मिल चुकी है। किसी बल्लेबाज को हमने जो देखा है, जब बड़े रन आप बनाते हैं, जैसे हमने जायसवाल को देखा, जब एक स्टार्ट मिल जाती है ना, आपकी आंखें जम जाती है, पर ये सतह अलग नजर आती है। जब आप नए आते हैं, जैसे जितेश आउट हो गए थे, तिलक वर्मा आउट हो गए थे भारतीय इनिंग्स में, तो वो इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस सतह में नजर भी आ रहा है गेंदबाजों के लिए। काफी मैचेस खेले जा चुके हैं विकेट के ऊपर, क्योंकि एक ही स्टेडियम है वहां पर और काफी मैचेस यहाँ पर खेले गए, तो थोड़ा सा जो गेंदबाजी में है वहां पर थोड़ा सा गेंदबाजी को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। बनाकर उन्होंने कट किया वहां पर, मगर सीधी फील्डर के हाथ में थी, मौका बन सकता था। देखना है कि क्या वो पहले गिर गई गेंद। जायसवाल थे वहां पर, जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और भूरतल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। वो चाहेंगे कि इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करें। काफी ओहो, अगर ये प्रयास करते तो शायद आगे डाइव लगाते तो मौका बन सकता था। उन्होंने गेंद की आने का इंतजार किया, गेंद थोड़ा सा उनसे पहले गिर गई, गेंद को खेला ऑन साइड पर। 1 रन रहे बल्लेबाजों ने, 46 रन 1 विकेट नुकसान पर नेपाल। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों पे 27 रन बनाए हैं, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी थी, मगर अभी भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पावर प्ले खत्म हो चुका है। क्या साई किशोर, अब ये भारत का रैंकिंग देखिए, पिछले कल जो खेल खत्म हुए थे तो भारत ने 60 मेडल जीत चुके थे, क्योंकि अब टारगेट इस बार था अब की बारी 100 के बार क्या भारत के कंटिजेंट ये 100 मेडल जीत के लाता है, क्योंकि काफी मेडल्स, काफी प्रतियोगिता भी बाकी हैं और काफी अच्छी टीमें हमारे एथलेटिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार 100 के पार जरूर जाएगा। जी, और काफी उम्मीदें ये पुरुष क्रिकेट टीम से भी है जो भाग ले रही है। जब भी वर्तमान मुकाबला ये चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, महिला टीम ने वो गोल्ड जीता था, तो काफी अपेक्षाएं ये मेंस टीम से भी है। भारत को किस प्रकार इनका प्रदर्शन रहता है, एक बड़ी चुनौती नेपाल के सामने इस मुकाबले में 203 रन की दरकार है।
और इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, क्योंकि लंबे कद के हैं और थोड़ा सा इनको हवा भी देते हैं, तो यहाँ पे टर्न जरूर मिलेगी साई किशोर को। लेंथ भी अगर आप देखें कि इनको आगे रख रहे हैं, वो टर्न के साथ उछाल भी नजर आती हुई, और उछाल इस सतह में है। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर चूके, और ये टेस्ट रहेगा अब दोनों बैटर्स के लिए, बूरतल और मल्ला के लिए, किस प्रकार स्पिनर्स को ये हैंडल करते हैं। रवि बिश्नोई का हमने ओवर देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करे, थोड़ी सी जब गेंद पड़ी थी थोड़ी सी मिट्टी निकली वहां पे, थोड़ी धूल निकली है, तो ये बल्लेबाजों का काफी मुश्किल होगा कि भारतीय स्पिनर्स काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तीनों ही गेंद काफी टर्न हुई है बल्लेबाज को बीट करते हुए, और ये अच्छी बात नजर आती हुई भारतीय स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी वाशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी करनी है, रवि बिश्नोई ने बड़ा अच्छा ओवर डाला था, और देखिए गेंद काफी टर्न हो रहा है और उछाल भी ले रहा है, तो संभवतः यहाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे से खेला उसे ऑफ साइड पर, और 7 ओवर की समाप्ति कल 48 रन 1 विकेट नुकसान पर। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल गया जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है, लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो, लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क रियल आइसक्रीम। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और रवि बिश्नोई आए गेंदबाजी करने के लिए, 7 ओवर की खेल, अच्छी गेंद, देखते हैं कि बाहरी किनारा लगा है कि नहीं, अपील की जा रही है वहां पर, शायद अंपायर इशारा कर रहे हैं कि थाई पैड को लेकर गेंद गई है। स्लिक के फील्डर बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मैं अजय मेरे साथ देखना पहुंचना चाहूंगा कि वूड को क्या लग रहा है कि ये फील्ड बल्ले से बहुत करीब थे। जी हाँ बिल्कुल, और पिछला जो थाई पैड है उससे गेंद लगी और वो आवाज सुनाई दी थी, तभी वो जो प्रतिक्रिया है रवि बिश्नोई की, उनको लगा कि शायद मल्ला लगा है, वो आवाज, वो डिफ्लेक्शन, पर मल्ला का भी यही इशारा था, वो भी कह रहे थे कि मेरे थाई पैड से छूते हुई गेंद गई है, और अच्छा मिशन कर रहे हैं वो, गुगली का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध। साई किशोर डीप में 1 रन और मिलेगा। वो जैसी स्पिनर्स आए ना, वो जो बाउंड्रीज है वो सूख सी गई हैं, वो बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे पिछले ओवरों भी साई किशोर के, थोड़ा अंदर ही रहना, थोड़ा हरकत भी कर रहा है, थोड़ी सी अब गेंद ग्रिप भी कर रही है सतह को, जैसे अब बूरतल स्ट्राइक पे आए हैं, एक डीप मिड विकेट तैनात, एक डीप स्क्वायर, एक लॉन्ग ऑन, 3 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पे, 27 पे है बूरतल, 29 गेंदों का सामना किया है, 8वां ओवर। प्रगति पर फिर से गेंद को हल्का सा टर्न और उछाल, 1-1 रन से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 5-6 रन भी आएंगे, वो रिक्वायर्ड रन रेट प्रवीण वो ऊपर जाते ही जाएगा, और वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। 50 रन पूरे हुए नेपाल के सिंगल के तहत, और बाउंड्री स्ट्रोक तो चाहिए हर ओवर पर, अगर भारत का इस लक्ष्य का पीछा करना है नेपाल को, 203 रन बनाने हैं 20 ओवर, अगर मैच को जीतना है और आगे बढ़ना है। मगर भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, जब से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, रनों पे अंकुश लगा है, और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, ये चांस जरूर लिया वहां पर, थर्ड मैन की तरफ गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। ये भाग्य ने साथ दिया, जिस जगह पे खेलना चाहते, जिस क्षेत्र में खेलना चाहते वहां तो गेंद गई नहीं, और टॉप एज, और कहते ना रन कैसे भी आए, ये फॉर्मेट ऐसे है, ये रन आने जरूरी है। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, निगाहें गेंद के ऊपर थी नहीं, टॉप एज, एक स्लिप तैनात थी, अगर शॉर्ट थर्ड का फील्डर होता तो शायद हाथ में जाता, और क्योंकि एक स्लिप तैनात थी, वो जगह पे कोई फील्डर था नहीं, तभी 4 रन और मिलते हुए यहाँ पे नेपाल को। चल यश, अब शायद तो खिलाड़ी को स्लिप से निकाल के शॉर्ट थर्ड मैन पर रखा है रवि बिश्नोई, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और अपनी पुलिस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, ड्राइव किया उसे ऑन साइड पर, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर, एक बाउंड्री स्ट्रोक जरूर ओवर में आया, मगर अभी भी रन गति जो है बहुत पीछे है, और काफी रन बनाने हैं, अभी भी 55 रन बने हैं 1 विकेट नुकसान पर, 203 रन का लक्ष्य का पीछे नेपाल की टीम 8 ओवर की समाप्ति के आसपास है ये लोग, और बूरतल काफी देर से बल्लेबाजी कर रही है, 30 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं, मल्ला जो आए हैं उन्होंने 12 रन बनाए हैं, कट किया वहां पर, शॉर्ट थर्ड पर फील्ड किया गया और रन नहीं आया, ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति 55 1 विकेट नुकसान पर। और जनाब
हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे Because I saw Bierkus, very recognisable amongst the Cambodian team. Did you get a word to work out the origins of his surname? No, I didn't. I know you're curious. But again, Cambodia out of the competition, but find themselves here watching, which is great. Why wouldn't you? Just have a look at first hand. The locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? They will all leave at the conclusion of this game, and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up the middle table, I see, India. So Bishnoi changes ends now from the grandstand in. I'll have to hurry back. The time comes, he didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. Yeah, and I think Podell will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Mahala's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. India will mind that as the run rate misfield. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately, though, you can see the lengths that India are trying to find against Mala now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him. Ball. It's, you were saying, it's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it? In any shape or form. कवर करके देख ले. Single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of quick spinners that give it that bit of air. You don't have that much time to create a narrative against a batter, do you? They're not looking to look at you. They just want to hit it out of the ground. उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है. बॉर्डर अभी भी आए हैं, शायद थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सतह को समझे, पर ज्यादा समय है नहीं उनके पास. 10वां ओवर इस इनिंग्स का जो फील्ड सजाई हुई है, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग बॉल, फाइनल सर्कल के अंदर एक डीप कवर पॉइंट.
एक और विकल्प है बतौर एक ऑफ स्पिनर, वो है तिलक वर्मा। भारतीय भी अब चौथे रैंक पे भारतीय टीम। इस बार थोड़ा क्रॉस लाइन खेला, फील्डर डी पे तैनात अर्शदीप और अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। काफी तेजी से रन लिया वहां पर, थोड़ा सा चांस दिया वहां पर अर्शदीप फील्ड से, और हालांकि थ्रो आया था उनका, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा दूर था, मगर फील्डर बल्लेबाज दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और बहुत तेजी से थ्रो किया था, मगर थोड़ा सा लेट हुए। आगे ड्राइव करना चाहते थे, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पर वाशिंगटन सुंदर। और ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जाओ, पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए, पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The athletes area, isn't it? Bangladesh, I saw down there. I saw Cambodia there a little bit earlier because I saw Bierkus. Very recognisable amongst the Cambodian team. Did you get a word to work out the origins of his surname? No, I didn't. I know you're curious. But again, Cambodia out of the competition but find themselves here watching, which is great. Why wouldn't you? Just have a look at first hand. And the locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? They will all leave at the conclusion of this game and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up on the middle table, I see India. They're within the top 5 nations. Always at the Asian Games are there or there. China miles in front. They've had a very good games, of course. Next over. Please, it's not 33 degrees. So Bishnoi changes ends now from the grandstand end. I'll have to hurry back. The time comes, he didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. You know, and I think Pudel will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Mahala's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. And we'll mind that as the run rate this field. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately, though, you can see the lengths that India are trying to find against Mala now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him.
It's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it? In any shape or form. कवर करके देख ले. Just a single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of spinners that give it that bit of air. You don't really have that much time to create a narrative against a batter, do you? 4 overs. They're not looking to look at you. They just want to hit it out of the ground. Like that, but I don't think there's enough on it. There's a fielder there. Oh, it's wonderfully done. Wonderfully done, and Mala will have to go. Well, this is what people want to see. They will go upstairs just to see if this catch has been taken legally. But that is a wonderful bit of work in the deep. I mean, it's one thing that mid-on initially takes the catch, but also that Rinku Singh comes running from mid-off to support. So often teams wouldn't do that. They would just leave a fielder to try and take the catch. But Rinku Singh goes with Rahul Tripathi, who must be on the ground, as a substitute fielder, and Tripathi just lobs it back in before he goes over the boundary, and Singh takes the simplest of catches to get rid of arguably the most dangerous man that Nepal have, Kushal Mala. 29 off 22, but he has to go. The new batter for Nepal, number 45. Absolutely fine. Dipendra. Great work that was. That's what T20 is all about. It's crept into all aspects of the game. You'll see it in test matches as well, but that's kind of where it originated. Airy to the crease. Big moment for him. Can he keep his record up of hitting his very first ball that he faces for 6? Against Mongolia, his first delivery went out the ground, and against the Maldives, his first delivery went out the ground. It's an excellent start. He tried his very best. Could have been out first ball. He did. And that 52, most importantly 50 off 9 record. It's Mongolia. Poor old Mongolia got absolutely battered. Learned a lot, but they got battered. And he's given. Can hit the stumps. Down leg. Just over. To hurry through for the single. They're going to go for a second as well. That's good running. Well, this is a very, very interesting mix-up, this, because Sekar Shore, as the bowler, goes to back up the keeper, and the backward point throws it at the bowler's end. I'm sure the coach will have something to say about that. He was behind his own wickets this time. I think India are
they're okay with just letting singles go by. Ordinarily, they'll be a bit tighter in there at backward point, trying to prevent the one, but singles ain't winning the game as the required rate goes above 15. Doing well. To run hard this time. Ooh, direct hit would have been interesting. What do you say, HD? Hustling and bustling, but hustle and bustle is not going to be enough. Yeah, as you mentioned earlier, even a single sees the rate required go up because you need more than a runner ball. But good that Nepal are happy to take those runs in the hope that they can find a boundary somewhere in the over. Because they need more than one now. They need a couple of boundaries and over. For 6. A great shot from Chore will be a little bit upset with himself because this is the first one that he's overpitched. This one up, around, off stump, and that's a lovely shot over extra cover all the way. So those singles, they play a part if this can happen. If you can find इस मिट्टी पे घर बाबा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट for Airy. He's a tiny man as well, so must be right. Continuing. Yeah, 10 off his first over. To do that again, and they're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. How far does this top edge go? It is amazing. Shivam Dubey is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubey is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go to the crowd again. I think it just about missed her. Yeah, throw back. There you go. Hope you heard it coming. He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. An opportunity at a very big over here. Dubey will be rattled. Still 3 balls split to go. He has been expensive. It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot. Because Dubey this time bowls a slower ball. And Airy has to wait as he comes charging down the wicket and flat bats it for 6. At his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him quite comfortably. Can they keep this momentum? You'll almost be happy for a review, just to
interrupt that momentum. Conversations. 观众朋友们，坐到观众区，请大家注意安全，小心避让，不要接球。同时， Come all the way from the other side of the field to have a conversation. And he is stay over at keep extra cover. Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end, the left armour. And that is going to be a race to save them. And they just about saved the boundary. Good work in the jeep again from India. It's excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that Dubey won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. It's going to run out, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? 21 off the over. Certainly those 3 sixes. सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमर चीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का। एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स में, और शानदार ओवर रहा था पिछली गुड्डे यारी ने 3 छक्के लगाए थे शिव दुबे गेंद पे, और अच्छी रनिंग विकेट पे 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 122 4 विकेट नुकसान पर स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया प्रवीण जी। अगर आप देखें हैरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और ये अच्छा मुकाबला उनके लिए किया, गेंद के साथ अच्छा कार्य किया। फील्ड में वो याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था, और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए, हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए, पर एक उम्मीद जागी है। जैसे पिछला ओवर घटा था, वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई। करने का प्रयास, टाइमिंग वैसा है नहीं, और सीधा फील्डर के हाथ में। साई किशोर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच डीप में, बड़ी विकेट मिलती है, एक और सफलता। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों है? वो तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी गेंदबाजी, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। काफी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए, हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जोरा भी अब ज्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत अभी चौथे रैंक में, मेडल्स की बात करें चौथे मैदान पे, और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से।
ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी। भारत कोशिश रहेगी भारत की कि क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और भारत मिशन कर रहे हैं वहाँ पर, वो सफलताएं हासिल कर चुके हैं। नेपाल काफी दूर है 70 रन और बनाने इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है मगर असंभव नहीं है, अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। एरी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाकर एक उम्मीद जगाई थी नेपाल के कैंप में। जोरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरूर मिलेगा 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128 5 विकेट नुकसान पर। तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट फ्रॉम प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अर्शदीप आए वापसी करते हैं और देखते हैं कि वो अपने अंतिम, क्योंकि तो एक और उनका शायद बाकी है। और ये मेडल टैली में देखिए भारत ने चौथे स्थान पर है, 61 मेडल भारत जीत चुका है। और अब की बार 100 के पार का जो नारा था वो शायद पूरा होता नजर आया। भारत की रैंकिंग देखिए, 13 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर, 24 ये उठाकर खेला है। देखते हैं कि बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जोरा के बल्ले से निकलता है। प्रयास कर रही है नेपाल, और हालांकि देखिए भारत कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, आसान नहीं ले सकता, क्योंकि 10 छक्के इस इनिंग्स में लग चुके हैं, साथ में 8 चौके। और ये एक जबरदस्त शॉट था, काफी ताकत थी इस शॉट में, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था। और बैट फ्लो देखिए कितना शानदार, वो बैट फ्लो बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में इस बार वो कट करने का प्रयास, चूंकि वहां पे अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर अपने एकमात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है, जहाँ हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है। एक और बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से प्रयास कर रहे हैं। अंतिम चमक के भारतीय गेंदबाजों को कहीं ना कहीं अंतिम करना होगा, 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। ये थोड़ा सा लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है, और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे। वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था एक खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ, एक उम्मीद जागी है। एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है पर जैसे आपने कहा भाई, नामुमकिन नहीं। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते हैं खेल ऐसा है, T20 का बहुत जल्दी बदल जाता है, और ये खेमा भी चिंतित होगा। बीवीएस लक्ष्मण, सराज भक्तुले, सीधे बैट से फील्डर डी पे तैनात और सीधा हाथ पे, यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहाँ पे। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक खिलाने को लगा और गेंद सील चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में और एक और सफलता भारत को मिलती हुई। 6वां विकेट गिरा वहां पर नेपाल का, कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी है बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद थी वहां, बाहरी किनारे गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर। इस ओवर में 2 छक्के जरूर लगे थे उस गेम में। रिंकू सिंह अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए हैं। जहां भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यह है भारत की मेडल टैली जो कल तक थी। आज एक मेडल और ऐड हुआ है। आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके हुए सेमीफाइनल फाइनल में बढ़ती जा रही है एशियन गेम्स में। 141 6 विकेट नुकसान पर ये 16वां ओवर चल रहा है। तो 3 का लक्ष्य पीछे करते काम ही 1 रन बनाकर किले जी की झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने भी खाता खोला था। देखते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति की। मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, लो ढक्कन डूबे डूबी डूब, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतले पतले डिलिशियस। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना, और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा और एक बार फिर उम्मीद जागी हुआ नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पर। कार्य मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना ओवर और एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया वहां पर। गेंदबाजों को सही लाइनर पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना 19 रन आए और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और क्योंकि बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है 6 रन में, कन्वर्ट हो जाता है। इस बार आगे खेला और साइड पे फील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी। और बाउंड्रीज आती रहेंगी ना, तो ये नहीं कि नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इनिंग्स की और बहुत ही खूबसूरत शॉट था। केवल गेंद को दिशा दी वहां पे। पिछले ओवर में 19 रन आए थे। अगर 18 रन के औसत से रन बनाए हैं तो शायद नेपाली मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि बड़ी डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई। 9 चौके और 12 छक्के लगे हैं। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद को हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा नाराज थे, देख रहे थे वाइट का इशारा होना चाहिए था। ऊंचाई काफी थी, फायर कर रहे गेंदबाज के पक्ष में जाता हो। 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर। भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है। जीते भारत ने मैच, माफ कीजिएगा, इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीत कर या हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने। तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। आवेश खान को जब थोड़ी बैकअप लेन गेंदबाजी करी है, ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा
परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में, तभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती है तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित, थोड़ा फील्ड बदलाव। जो शॉट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ डीप थर्ड पे था, ये बैट बाउंस विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद हाथ से चटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी। गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी। ओहो, फेरि मिस भयो। ओभर भन 9 विकेट गए। फिर वापसी का दर्श देख अपना अंतिम ओवर लेकर आगे बढ़ते हैं। होइन 10 विकेट गिरी गए खेला है वहां पर, एक सीधा कैच वहां पर यशवी जायसवाल को, और एक 8वां छक्का लगता हुआ वहां पर। अब भारत की नीच लगभग निश्चित होती जा रही है। इंडिया में धोबी छूटे थे यार। बचपन की डाली पे ख्वाब थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस भाई, जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी पाने जी हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। वाइड पनि दिन सक्छ नि। सन्दीपले एक रन दियो। एक रन दियो सन्दीप। वैसा के 16 बना छाले 100% प्योर। केन चारू प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अब तो 10 चौका हाल्यो भने जित्छ। बचपन की डाली पे ख्वाब 10 चौका हानेको 8 विकेट हो चुके हैं नेपाल के। अब लगता है कि भारत की जीत काफी करीब आ चुकी है। लेने वाली कुछ नहीं सकता। ऑफसाइड पर रन लिख चुका लिया बल्लेबाजों ने। 157 8 जी हाँ बिल्कुल, ये भारतीय खेमा पीवीएस लक्ष्मण सराज पुतुले जो भी जुड़े हुए हैं भारतीय टीम के साथ। ये जो इनपुट्स हैं फायदेमंद साबित होंगे ये खिलाड़ियों के लिए। समस्या जो नेपाल की है कि लक्ष्य इतना बड़ा था तो वो बड़े शॉट्स के लिए जाना ही था। 8 विकेट गंवा दिए, 18वां ओवर चल रहा है अभी। में चने आए हैं नए बल्लेबाज की सीमा में मौजूद हैं। 46-16 गेंदों में लगातार कठिनाई बढ़ रही है नेपाल के लिए। इस बार एक मौका उसका रन आउट का, जी हाँ डायरेक्शन की दरकार थी।
बैकअप बहुत अच्छा, काफी आगे निकल गए थे वहां पे, पर ये बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टेड होती तो इस एंगल से भी प्रतीत हो रहा है कि जी हाँ बहुत दूर रह गए थे, बहुत दूर। थोड़ा सा हल्के कोई विकेट के पीछे, हालांकि अगर आप फॉलो थ्रू में होते हैं तो आसान रहता, नहीं थोड़ा विकेट के पीछे होते तो और आसान होता। हालांकि समय था उनके पास, अर्शदीप के पास, मगर रनआउट का मौका बना था, वो दिया और अच्छी गेंद थी वहां पर, यॉर्कर लेग पे उसको ड्राइव किया, उसके ऑन साइड पर कम ऑन पर फील्ड किया जाएगा। पीछे पर 158 देखिए वहां काफी खुश है। नेपाल की खेल में थोड़ी सी अच्छा नहीं, क्योंकि ये मैच हारने के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। भारत की टीम फिर मेडल तालिका में आगे बढ़ती नजर आएगी। फिनिश करना है तो भारत को अगला मैच जीत कर आगे बढ़ना होगा। भारत की काफी उम्मीदें हैं जीत कर आएगी। डॉट बॉल आती हुई तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ गया कलर कर देना नेपाल के लिए 158 के नुकसान पर 45 रन चाहिए। 13 वाला 45 बड़ा स्कोर क्लास के अंतिम 3-4 ओवर में बल्लेबाजों ने बनाया था। रिंकू सिंह उसका एक उदाहरण थे, तो अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। क्या नेपाल के बल्लेबाज कर सकते हैं? फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला ऑन साइड पर और ये मिस एक और गेंद लौटने के बाद 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति 162 8 विकेट नुकसान पर। बाउंड्री बॉल फॉर नेपाल। गाँव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे। Hey champ, ready for Switzerland? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो दादी के गाँव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। So the penultimate over, bowled by the front line seamer. As you say, brought back. Perhaps trying to just clean this up now. Yeah, the teams tend to have their number one bowler tends to bowl the penultimate over in a run chase because they always want to have a large score to have to go and get in the last over. You never want to have your best bowler having to defend 3 or 4. That's been hit sweetly. No need to jump for that one. Boundary for Nepal. Sure, he just watches that one go over the top. Yeah, they're still wagging the tail. This is another clean strike from a back of the length delivery. I tell you, I'd be very interested to know as far as the boundary count goes. If Nepal have hit more sixes than India. Must be close. I think that's a 13th, isn't it? Edge at 4. Yeah, I think it was 12. Boundary ball for Nepal. Well, here we go. Here we go now because there's 10 of 3 deliveries. So we're definitely going down to the last. Just what can they do of these last 3 deliveries to put that fifth bowler, and we don't know who it's going to be, to put him under immense pressure. Better. Good comeback. Keeper stopped that one. I don't think he'd be keeping in the next match if he had let them go through. 2 boundaries here would be very interesting for Nepal. Doesn't have to both be out the ground. A 6 and a 4 would be lovely if you're a neutral. Well,
Obviously, there's one stacked against them, but just bear in mind they're going 9.2 and over themselves. That's, against India, that's not a bad effort. Great effort. Closer than many thought. The Indians have got a bit quiet in the crowd. So have the Nepali fans as well. Down there, just be a single. Nicely bowled. Nicely bowled. I was expecting in the first three. He's gone for a few here. This fourth over. Which can not be plain sailing for him. That's a couple of wickets. Well, both their spinners went for 6 and over. Up in the air. Should be taken. And is. He's had some catches to take down on that long on boundary. That. बैग किसका है? मेरा। No fruit on plate. नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है, और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। It's a good catch, a bit easier this time. Didn't have to put the dive in. We've got Avinash Bohara. One more over to go. 30 needed. So the ball gets thrown to Shivam Dubé, who has all of 30 to defend. So that's the reason why they bowl the number one bowler, that penultimate over. It just eases the pressure a little bit on the fifth bowler. Everything's got to go underground. Swing and a miss. India can still easy. Yeah, and in the context of it, people will look at the scorecard and see India win by X amount of runs and say, well, that's pretty comfortable. But I tell you what, there's been periods of this game where India would have got a few jitters. Granted, there's a number of their players that are doing duty for India at a 50-over World Cup at home who would ordinarily make this team. But the depth that India has in comparison to the depth that Nepal has, this has been a wonderful performance by Nepal in this quarterfinal. Good fielding. His own bowling. It's taken to the boundary several times. It's been a bit of a difficult spell for him, but he's coming back well in this last one. No. 3 बॉल में 30 रन 2 बॉल में 30 रन His innings that started with a bang is रिनु को win putt. Where were these Yorkers? 2 बॉल में 30 रन है Mind you, you are bowling to the last pair. रिनु को म्याच सकिसक्यो म्याच त सकेको छैन त्यो अब 2500 छ त्यो हाम्रो 5 वटा खिचिसकेको छ कि त्यो कामै छैन के फरक पर्दैन रिनु भनेर गर्नु न भन्दै थियो त्यो आसु गर्नु नि ए सुन न Still trying to find the boundary. सकिसक्यो त अझै आइछ अझै पाइन्छ Four to go. 2 बॉल में 1 बॉल अब Four more to part this competition, but not but a few records. A bit of respect to the name. मैले त देखेकै थिएँ नि त
छुट्टी दिखाएँ नदेखेको हिँडिसकेको थियो